Hello everyone, welcome to Unacademy. So before starting today's session, I would like to have the input as well as the concurrence regarding the quality of video as well as audio. If it has been perfect, just write perfect over the like chat and then we are going to start today's session. So let me focus over the agenda behind today's session. Everything is more than fine now? Probably everything has been fine. Just a minute. Yes. So in today's class, we are going to focus over the concept of maxima and minima, where the function carries two number of independent variables. So the crux behind the today's video must be clear to all of us. We had been focusing over the concept of maxima and minima, where the function carries the two number of independent variables. Yes, we had been focusing over the concept of maxima and minima, where the function carries the two number of independent variables. Let's take, I had taken a function. The function could have been written as z, which is been depending over the x and y. You can have example of x square plus of y square. Similarly, you can have example of x square 2x plus of y. Virtually speaking, whenever you had a function, and if you have been dealing with the concept of maxima and minima, which carries the two number of independent variable, by default the problem is being fallen over the concept of maxima and minima with the function which carries the two number of independent variables. There would be a bit difference between the function which we have already drawn, which had been carried only one independent variable and the two independent variable. May you know what had been the difference? Because of x, the y was changing, and that is why we were taking xy plane. With the respect of x, the y was keep changing, and it was contour actually. But now the x and y can change its all respective values, and because of x and y, the z is supposed to change. So obviously it is going to be a 3D space. What I'm saying, it is going to be a 3D space. So you'll be having a x-axis, y-axis, and according to the x-axis and y-axis, or the value of x and y, the value of z is supposed to change. Value of z is supposed to change. Like this has been x, y, and here comes z. Here comes z. Let me take an example and then I will try to explain this figure as well. Let's take, we had a function and the function has been written as z or maybe f, which has been a function of x and y, and that is been equals to of x square plus of y square. As far as this structure has been concerned, no, it has been upper facing paraboloid. How did I know about it? Just try to understand in this way. X square plus of y square, if it has been kept constant, it is going to be a circle. Circle with a radius of r. Let's take when the function worth is being 0, we had a circle and the circle radius is being 0. Let's take if it has been 1, the circle radius has been raised to 1. If it has been 4, the circle radius has been raised to 2. What has been happening? So virtually speaking, if you'll try to figure it out, how this structure is going to be, let's take, this has been my x-axis, this goes y-axis, and this goes z-axis. Yes. As the value of function increases, what happens? The circle radius keep increases. At z is equals to 0, the radius of the given circle is being 0 and centered at origin. X is equals to 0, y is equals to 0. Now what had happened? Now we had raised the value of z a bit. Let's take the z is being reached to 1. So now the circle radius would become 1 over here. And let's take now the z has been raised to 4. So circle radius would again be increased. And if you add them together, if all of the important points are being added together, it is going to be a structure which has been upper facing paraboloid. And obviously it has been 3D structure. It has been a 3D structure. Could you really understood what exactly I wanted to communicate? So if somebody would say, sir, at x is equals to 0, which kind of the structure has been? Obviously it has been upper facing paraboloid. Like the coconut we used to have, no, let's cut the coconut in between, and the upper facing coconut is going to be a concept of upper facing paraboloid, and this point has been the point where the minima has been lying. So I can say this point, the minima has been lying. But to locate the minima, you can't have the only and only value of x. You should also have the value of y as well. So may I know where the minima has been located? Yes, sir. This minima has been located at
x is equals to 0 and y is equals to 0. Let's take a complex 3D structure. Here I had taken this is being a z-axis. Let's take this as being a y-axis and this is being the x-axis. You yourself would be able to understand. These are the points, no? These are the points where the value has been maximum most within that given frame of reason. So obviously the maxima has been framed. So may I know what would be the what would be the point over here? Obviously, sir, this has been a point of maxima. May I know which point it has been? Within this localized region, obviously, here we have been creating the minimal most value. So it has been a point of minima. It has been a point of minima. Same goes over here as well. It has been maxima. Maxima. And these all are been the maximas. These all are been the maximas. These all are been the maximas. Agreed, no? If you want to locate where the maxima has been created, you had to search the value of x as well as y. What you will do, you will draw a vertical axis over xy plane. You will find the value of x as well as y. So this would be the value of y and this would be the value of x. Let's take the value of x is being, let's take a, and value of y is being b. So may I know which point it had been over the xy plane? It is been a comma b. And if I say what would be the worth over this point, obviously the value of x has been a, the value of y is been b, and the value of z is going to be the function at a comma b. Function at a comma b. Agreed? No? Till this point, I don't find any of the student would have any kind of doubt, at least at this moment of point. Yes, sir. We could understand at this moment of point. But I would like to know from each one of you. If we'll focus over the maximas and minimas, still the slope has been 0. Slope are been 0. But here, there are two slopes is to be calculated. Slope with respect to the x and slope with respect to the y. Why? See, if it has been a smooth maxima over here, so at smooth maxima, if you will calculate the slope with respect to the y as well as x, both has to be 0. Now, one thing must come into mind, sir, why we have been calculating the two slopes? Because we want the exact value of the point of extrema, and that contains the two value. Earlier it was containing only one value, and that was the value of x, and that is why only one equation was more than adequate to know the value of exact extrema point. But now we want the 2 points, and that is why the two equations have been required. And as the two equations have been required, here video quality is okay now, or is it been buffering? Just a minute. Could you understand what I am saying? So if you are in search of this point, what you had to do, you had to find the slope of the given function with respect to the y as well as with respect to the x. And wherever both of the value becomes 0, that has been the point where the extrema, no, maxima, no, minima, no, stationary point is being created. So what does it mean by the stationary point? As we had learned earlier, the stationary points are in the point where the slope offered over the given function becomes 0. Earlier it was f dash x is equals to 0, and now it is going to be differentiation of f with respect to the x is equals to 0 and differentiation of f with respect to the y is equals to 0, and definitely we had to deal with the partial differentiation or partial derivative. Did you really understood what exactly I have been talking about? So as far as the maxima has been concerned, maxima is going to be look something like this, and that would be lower facing paraboloid. The structure is going to be something like this. In 3D, the structure is going to be something like this. And this has been the point where the maxima has been created in this localized region. Let's take the value of x is being maybe a, y is being b. So yes, this value would have the value of x as a, y as b, and the value of z as function of x and y at a comma b, and that would become a and b, like this, like this. Now in the same sequence, let me do one thing. Let me talk about the minima, how the minima would be created. This structure would be just flipped, and now you can say it would be upper facing paraboloid.
I'm not calling it parabola, no, paraboloid. It has been a 3D structure. Like you used to have a coconut, no? Cut coconut in between. So the structure would be facing upside, and here you are going to get the minimal most value. Minimal most value. So obviously you can again find this value. You will find the value of x and y. Let's take the value of x and y are being a dash and b dash, and the function worth at a dash and b dash. Yes. And this has been minima over here. So this has been maxima. What I'm saying here, the maxima has been created. Where the maxima has been created, my bhai? It has been created at a comma b. And what was the maximum worth of the function? So the maximum worth of the function is been f of a comma b. Similarly, where the minima is been created, my dear friends, the minima is been created at a dash comma b dash. And what was the minimal most worth of the function? It was f of a dash b dash. And now the another point is been a saddle point as well. The saddle point is also been a very important point, because the saddle point, the understanding is been quite okay when we discuss about a function which carries only one independent variable. But as it carries two independent variable, knowing the concept of saddle point becomes bit difficult. Probably horse rider you must have seen. The horse rider used to have this kind of seat. This kind of seat they used to have, like this, like this. This kind of seat they used to have. Now what had been happening? Now here also the slope is becoming 0. So the point where a person would be sitting, the person would be sitting, here also the slope is going to be 0. Obviously it won't be curvy, no? It won't be curvy, the slope is going to be 0. But what had been happening, my dear friend, as the person would move towards right hand side, the magnitude is increasing, left hand side magnitude is increasing, front side, what had been happening? The magnitude has been decreasing, and back side the magnitude has been decreasing. Could you feel it? What exactly I have been calling out? Let's take this has been a structure. Like horse rider used to sit over a horse riding seat, no? If you'll go towards this side, the magnitude is increasing, this side magnitude is decreasing, this side the magnitude is decreasing, increasing, increasing, and decreasing. So obviously it won't be maxima nor minima. Why? The maxima has been a point where locally there must be a maximum most value. If you go towards right hand side, left side, back side, front side, even inclined side, everywhere the magnitude has been keep decreasing, and here the magnitude has been keep increasing. Did you understand what I'm saying? So this has been a point of saddle point. But did you really notice the fact or not? Either it has been maxima, minima, combinedly extrema, whether it's been a saddle point, the slope is supposed to be 0. Slope of what? Given function with respect to the x as well as with respect to the y. Did you really understood what exactly I wanted to communicate? So as far as the function which carries the two number of independent variables, if we focus over where the extrema or saddle point would be created, by default the first derivative of the function with respect to the x as well as y has to be 0. So what we have been doing, as far as the process of solving the problem related to the two independent variables of maxima and minimas are concerned, what we are going to do, we are going to calculate the 5 important factors, and that is been P, Q, R, S, and T. Probably this P, Q, R, S, T you must have studied in first semester when we were dealing with the partial derivatives. So what we would do, we would take the given function, it could be f, z, anything. We will take the partial differentiation of that given function with respect to the x, then comes y. And here it is been the double derivative with respect to the x. So s has been a point where major of the student do mistake. What they would do, they would just take dou square of f, dou y square. No, my dear friend, this has been dou square of f, but partially with respect to the x ones and y ones, and then comes t, and that is been dou square of f, and here comes dou z square. Anyways, let me focus over the extrema. How will you, let me focus over the saddle point. What does it mean by the saddle point? The point where the slope of the given functions becomes 0. And now, as we had to locate the value of x as well as y, we need to have the two equations. And from where those equations are supposed to come? They are supposed to come from comparing P and Q as being 0. Did you understand what I am saying? So what had been happening, my dear friend? So we will take the first calculation of stationary point. Stationary point. Yes, stationary point. What we are going to do over here? Now the P as well as Q is being compared with 0. And once the P and Q is being compared with 0, definitely you are going to get the points where the slope of the function is being 0. Now those points could be extrema,
maxima, minima, or even it could be the saddle point as well. So what I would be doing over here, let me show you the important formulas which we have already brought for you guys. So you can write it over here. So what I have done over here, see, yeah, this one. So if you have a function which carries two number of independent variable, the first step is going to be, you yourself would be able to understand it. The first step is going to be what we have been doing over here. We are going to take the partial differentiation of the given function with respect to the x as well as y. This partial derivative I would be calling as p, and this I would be calling as q, which would be required in future while calculation of the stationary point. Agreed what I'm saying? Let me go ahead. What I would do in second step, I would compare the first derivative of the function with respect to the x with 0, and same goes with y as well. May I know why it had been happened? Obviously you must be knowing about it. See why it had happened, you yourself would be able to understand it. See, if here the maxima has been arrived, no? So if the maxima has been arrived, the slope with respect to the x is supposed to 0 and the y is also supposed to be 0. And that is why the partial differentiation with respect to the x as well as y, both are being taken. Both are being taken. Agreed, no? So probably this must be the point which must be clear to all of us. Must be clear to all of us. Yes. Just a minute. Yes. Agreed till this point? I don't find any of the student would have any kind of doubt, at least at this moment of point. Now what we had to do, we in the same sequence, we also had to find the value of r, s and t. So virtually speaking, you have calculated the 5 different differential values, and they are been p you have calculated, the q is also being done, and then comes r, then comes s, and then comes t. Anyways, by comparing p with 0 and q with 0, we will find the stationary point, the point where the slope becomes stationed or 0. And with the help of RST, we will be able to find whether the given point is been a point of extrema, if it has been extrema, maxima, minima, or whether it has been a point of saddle point. What we have been doing, R, S, and T all have been calculated. So what I would do, we would start with calculation of RT minus of S square. What we will do at the point of stationary, or I should say at stationary point, we will calculate RT minus of S square. If the value is being 0, by default, the point is going to be a point of extrema. You should have a clear-cut idea about it. What I am saying, if RT minus of S square at stationary point is being found greater than 0 or positive, by default, that is going to be a point of extrema, which may include maxima or minima. Point of extrema. Agreed what I am saying? Now, if the value of RT minus of S square is been lesser than 0, what had been happening? The saddle point has been created. Neither maxima nor minima, but still the slope is being 0. This is going to be a saddle point. And if the RT minus of S square has been found precisely 0, further investigation has been required. The questions are not supposed to come from this point. Otherwise, if you want, I can take few number of questions from this zone as well. Did you really understood what exactly I wanted to communicate? So till this point, I don't find any of the student would have any kind of doubt. So conceptually, you could have learned from this approach. And now mathematically also, I have given all of the important formulas which have been there in front of you. We will calculate P, Q, R, S, and T, and then we will compare P and Q as well as P and Q with 0, and from there we will try to extract the stationary point. Then we will calculate RT minus of S square. RT minus of S square, if it has been greater than 0, by default it would be a point of extrema. If R is greater than 0, it is going to be a point of minima. If R is lesser than 0, it is going to be a point of minima, so on and so forth. So would like to know from each one of you, till this point, everything has been clear now? Everything has been clear? So now here comes few number of questions. And with the help of graph as well, I will try to explain each and everything. So here comes the first question. This question has been experienced by Gate Production Engineering, year of 2007. So let me focus on this problem and we'll try to
Bring this question towards working board and we will try to smash this problem there only. Read the problem carefully and tell me what could have been the best most answer. Read the problem carefully and tell me what could have been the best most answer. Let me bring towards working board. Yes, here comes the question. Here comes the question. And let me draw this graph over a 3D grapher as well. Then only you will be able to actually understand what had been happening with this graph. So let me draw over my desktop and I will try to project that desktop as well. So let me draw over my desktop and then I will try to project over the desktop as well. So I would request to each one of you try to get what would be the best most answer for this given question. For this given question, I am trying to draw this graph online and I will project that one. Yes. Tell me. What must have been the best most answer? So the function which I had to feed is been x to the power of 2, okay, x to the power of 2 then becomes minus of y to the power of 2. I would like to know the value from each one of you. Tell me what could have been the best most answer. What could have been the best most answer? I have already drawn it. I will try to explain graphically as well. The process which is need to be followed. The first important point is to calculate all of the important PQRST derivatives. So the first step would be calculating all of the important derivatives. So here comes P that we have written as the partial derivative of the function, and that is been f with respect to the x, and that would be 2 times of x, and here it becomes 0. Same goes with q as well, the partial differentiation of f with respect to the y, and that becomes minus of 2y. Then goes r, double derivative of the function with respect to the x. Once already differentiation has been made, we will take one more time, and that would lead to, and then goes s, and then goes t, and here s would be, what has been the s? The s has been a differentiation with respect to the f twice, once with respect to the x and once with respect to the y. So already the differentiation with respect to the x has been taken place. You will differentiate with respect to the y, then also 0, and from here also 0. The value of s, at least for this given problem, is found to be 0. And as far as the t is been concerned, may I know what had been the t over here, my dear friends? The t, if we'll talk about the t is double derivative of the function with respect to the y. And obviously, it stands for dou square of f over dou square of y, and this value has been minus of 2. This value has been minus of 2. So this point must have been clear to all of us. Anyways, any of us would be able to tell anything? What must have been the answer? What must have been the answer? Tell me. What must have been the answer? I need the answer from the student who have been live now. Now the same process is to be followed. May you know what had been the process? We will find the stationary point, and the stationary point would be found by just comparing the first derivative with respect to the x, comparing with 0. Anyways, this has been 2x. 2x has been compared with 0. The value of x has been 0. Same goes with q as well. Q is again been compared with 0, and here comes minus of 2y. The value of y is again being 0. So may I know what had been the stationary point? The stationary point is being 0, 0. But now this stationary point can fall in 3 different categories. It could be maxima, it could be minima, or even it could be a saddle point as well. How do I know about it? I would take RT minus of s square at this point, 0, 0. What has been R over here? R has been 2. What has been T over here? The T has been minus 2. Minus of s square, anyways it has to be positive only. What has been s has been 0, and once you subtract it, no, the value has been negative. What does that actually mean of it?
That means the point at which the slope had become 0 is no more extrema point. It is just been a saddle point. So a local minima? No, not at all. Local maxima? Not at all. Both local maxima, and anyways, it has been a illogical option. It has to be ruled out at any cost. The B has been the best most answer. B has been the best most answer. Did you understand what I am saying? So what I have been doing over here, I would like to know from each one of you. I would just project my screen now. So here comes my screen. See what had been happening. I had given the input. The input has been function. You can see very well function, which has been a function of x and y, and that had been taken as x square minus of y square, and that is been drawn over 3D graph. And you yourself would be able to understand at x is equals to 0 and y is equals to 0. May know whether the maxima has been created or minima has been created. Yes, the red and green are been the x and y axis, and this blue is been the z axis. I would like to know from each one of you. It is very same as the seat of horse rider seat. And if it has been horse rider seat, you yourself would be able to understand. If you'll go towards this side, no, this side, in green line -1, -2, the magnitude of z has been decreasing, and similarly green line towards +1, +2, again the value of z has been decreasing. But if you'll go towards right side, left or right, no, left or right, you yourself would be able to understand the value of z has been keep increasing. So should I say this has been a saddle point? Obviously, sir, it had been a saddle point. It had been a saddle point. I would like to know from each one of you whether this concept has been clear or not. I should know this. Yes or no? Yes. So this has been the structure now. Agreed? So I don't find any of the student would have any kind of doubt, at least at this point. At this point. Doesn't support that. Yes. So I think I should come back and come to the camera now. Come to the camera now. Tell me whether this concept has been clear to all of us. So I don't find any of the student would have any kind of doubt now. So I think it's been the right time. I should be coming back to the working board once again. So may I know what had been the best most answer? The B has been the best most answer. B has been the best most answer. In the same sequence, I think it has been the right time. I should also be taking the next question as well. Here comes the next question. Anyways, starting 1 or 2 questions, I would also try to smash graphically, but then also in future we will just be focusing over the mathematics. Agreed? No? So let me show the concept once again, what had been communicated over here. So here comes a screen, and this has been the graph which we have drawn. You yourself would be able to understand. This has been the point x is equals to 0, y is equals to 0, and this is been a saddle point. If you'll go towards right side, the magnitude is increasing. If you'll go towards left side, magnitude is increasing. But if you'll go towards front side or back side, no, magnitude is been decreasing. You yourself would be able to understand. So should I say it has been maxima? No, I won't be able to say it has been maxima. The maxima has been a point which has to be carrying a maximum most value in the given localized region. If you'll go towards this side, increasing, decreasing, back side, decreasing and decreasing. So obviously it won't be the case. It won't be the case. So let me come back to this. And the same function is being taken. No, same function is being taken. Agreed? No? So here comes the next question. The function f, which has been a function of x and y, is been written as a 2x square plus of 2xy minus of y cube, has only one stationary point, the point at which the slope of function with respect to the x and y is being 0, or where the curve is being smooth. Two stationary point at 0, 0 and 1 by 6, minus 1 by 3. The two stationary point at 0, 0, no stationary points. Read this problem carefully and tell me what would have been the best most answer. Again, the same process is to be followed. We will calculate its P, Q, R, S, and T. And end of the day, with the help of those values, definitely we will be able to figure it out what must be the best most answer.
So p is being the partial derivative of the function with respect to the x. And once we do so, it becomes 4x, the differentiation of 2x square with respect to the x. And then comes 2y. 4x plus 2y. The p has been clearly known to you. Now comes q, the partial differentiation of the function with respect to the y. Obviously, this becomes 0 because it does not carry any component of y. Here it becomes 2 of x, and here it becomes minus 3 times of y square. P and q has been clearly known to us. Is clearly known to us. Yes, no? Yes. Is clearly known to us. In the same fashion, I think this is the right time. We should also be focusing over the r. R has been the double derivative of the given function partially with respect to the x. Once is already been done, so it is simply been 4. Then comes s. S is been the double differentiation of the function f partially with respect to the x as well as y. X with respect to the x is already been done, so you can take with respect to the y. So the value is simply been 2, and here also the value is supposed to be same. The value is supposed to be same, and here comes t. In t, we will take the double derivative of the function partially with respect to the y. Already once with respect to the y is been made, no, we will take another differentiation, and this value is been minus of 6 times of y. 6 times of y. So at very beginning, we will be in search of stationary points. How will I do so? The stationary points are in the point where the slope of the given function with respect to the x as well as y becomes 0. We will take this as 0 and we will take this as 0, and we will try to know what's the outcome we can bring out of it. 4x plus of 2y has to be compared with 0, and here 2x minus of 3y square has to be compared with 0. Or I should write this as a 3y square is equals to of 2 of x. Anyways, what we have been doing over here, see, 2y has been kept as it is, 4 of y has been brought towards right hand side, that becomes minus of 4 of x, and 2 is again been divided. So y is equals to of minus of 2x. Y is equals to of minus of 2x. Now what we can do over here, my dear friends, I can feed this value over here. So once I feed the value over here, so 3 has been 3, it has been minus 2x raised to the power of 2 is equals to of 2 of x. Anyways, what we can do, this minus has been squared off. Anyways, it's been neutralized over here. So what we could have done over here, so this could have written as 2x raised to the power of 2 minus of 2x is equals to of 0. 2x has been a common factor. I had brought this as out. So the factor which has been left out is 2x getting multiplied with 3. That has been 6x minus of 0. And this has been a quadratic equation. And easily we may able to find the values of x which will keep this equation intact. The value of left hand side and right hand side are been same. So what I would do over here, the 2x has been compared with 0, the value of x has been 0. And similarly, the 6x minus of 1 is been compared with 0, the value of x has been 1 by 6. So possibly the stationary points are being 2, and one carries x is equals to 0 and the another carries x is equals to 1 by 6. What we are going to do over here, now again, this data has to be fed over here. See, we will feed this data over here, either this data over here. X has been fed as 0, and as the x has been fed as 0, y is also been 0. So yes, the coordinates are being clearly known. 0, 0 has been that point. 0, 0 has been that point. And now x has been fed as 1 upon 6. So what had been happening? Just you yourself would be able to understand. So here it has been 1 divided by of 6. Yes, so the value which is supposed to come, how much it has been? 1 divided by 6 has been kept in? No, 1 divided by 6. Okay, sir, 1 divided by 6 has been kept in. 1 divided by 6, that is fine, sir. Where? 1 divided by 6, that is fine, sir. And once you'll feed the value over here, no, it is supposed to come minus 1 by 3. Minus 1 by 3. Minus 1 by 3. Yes. So I can say there have been the two stationary points. The points are been at 0, 0, and the points are been at 1 by 6, minus 1 by 3. So these are been the two stationary point. As far as this problem is being concerned, the stationary point where the slope of the given function becomes 0 with respect to the x and y are being called as the stationary points, and those points are being at 0, 0 and at 1 by 6, minus 1 by 3. Minus 1 by 3. But among them few could be maxima, minima,
or even the saddle point as well. So that has to be scrutinized now. That has to be scrutinized now. How will I do so? What I would do, the same thing, rt minus of s square, rt minus of s square is to be calculated. What has been r over here? R is been 2. R is been 2. Just a minute, where it has been? Yeah. R is been 2. R is rt, no, 4, 4, 4. R has been 4. What has been t over here? It has been minus of 6y. And s square has been minus 4, minus 4. So virtually speaking, it has been minus 24y minus of 4, minus of 4. Yes, minus of 4. Minus 24y minus of 4. So what had been happening? Just try to understand in this way. Just try to understand in this way. First, we will keep the value of value of y as 0. And once we'll keep value of y as 0, you yourself would be able to understand the value of rt minus of s square has been minus. And if it has been minus, definitely this has not been a point of extrema. This is going to be a saddle point. Saddle point. If let me feed y is equal to minus 3. Once we'll feed y is equal to minus 1 by 3, sorry, minus 1 by 3. This minus and minus becomes plus. 24 is divided with 3, that is been 8. 8 minus of 4, that is been 4. So I can say this has been a point which has a certain hope. This has been a point which has a certain hope, where the extrema is being framed. Whether it's been a maxima or minima, how will I know about it? Just by knowing the value of r. R has been positive, so obviously that point has been a point of minima. Point of minima. So may I know what must have been the best most answer? Only one is stationary point? No, sir. 2 is stationary point? Yes, sir. 2 is stationary point? No, sir. No is stationary point? No, sir. But even they could have asked this problem into the better way. But I'm saying they could have asked this problem into the better way. If you'll focus over this graph, no, I will show you over the desktop as well after the 3D drawer. One thing has been quite sure, at both of the points, the slope had become 0. Among them, 0, 0 has been a saddle point. And at 1 by 6, comma minus 1 by 3, that had been a point of what? Minimum. Let me show you. Let me show you. So here I come to the desktop. Let me insert this function and I'll try to explain how the things have been working. Yes, just a minute. It would take just 2 minutes. So let me feed the function over here. The function is been 2x square. Yeah, it is been 2x square. So here comes 2x square. Let me project this, no issue. So it has been 2x square, then it had been 2xy, and then y has been raised to the power of 3. Y has been raised to the power of 3 with a minus sign. And here we had plus 2xy. Yeah. You yourself would be now will be able to 2x square, 2x cube it was there. No, everything is fine. Yes. Now you yourself would be able to understand. See, at 0 what had been happening? At 0 what had been happening? 0. Whether it's been a maxima, whether it's been a minima. No. 0 is been a saddle point. You yourself would be able to understand. 0 is been a saddle point. Saddle point. In 2D structure, you will be able to experience the thing in the better way. It is been a saddle point. It is been a saddle point. Yes. Yes or no? Towards one side, you will be finding increasing. Towards another side, you will be finding decreasing. Or virtually speaking, the slope had become 0, but neither it is been maxima nor it is been minima. What I'm saying, neither it has been maxima nor it has been minima. Nor it has been minima. So that has been the point which we had to have on our mind. The one point is been maxima or minima. Minima as well. Let me show where it had been. So the point which had been the point 1 by 6 minus 1 by 3. 1 by 6 minus 1 by 3. I'm not able to show that exact point. I have to expand it just a minute.
Yes, now you can see very well. Yes, now you can see very well. Now the minima is also been found. Minima is also been found. So this is what I am saying. If you had a little bit idea about this complete graph now, that's it. Yes. So may I know what would be the bestmost answer? What would be the bestmost answer? Yes, sir. So I would request to each one of you, the student who really wants to grasp the concept behind the mathematics, they should be regular in the class. They should be regular in the class. So could you really understood what exactly I wanted to communicate so far? Yes. This kind of a structure is already being seen. This kind of a structure is already being seen. Agreed, no? So I don't find any of the student would have any kind of doubt, at least at this moment of point. So should I say this till this point, teacher, everything has been clear? Because today would be the last class over the concept of maxima and minima. In future, we will move forward taking the different case scenario as well. Yes, no? So here comes, yes, continue editing. Continue editing. Here comes. Okay, then. Now here comes the next question. This question is being for you guys. Read the problem carefully and tell me what would have been the best most answer. Read the problem carefully and tell me what could have been the best most answer. Meanwhile, I will try to draw this graph over the desktop as well. Over desktop as well. Chalo, फटाफट try करो. Try this out. Try this out. Let me draw this over the 3D graph drawer. And here it is being 4x square, 4x raised to the power of 2, then comes plus of 6y squared, 6y raised to the power of 2, then comes minus of 8x, minus of 8x, and then comes minus of 4y, minus of 4y, and here comes plus of 8, plus of 8. Ah, such a beautiful curve it is. Probably you won't be able to see it, but no issue. Try this out. Try this out. Has a minimum value, has a maximum value, has a minimum value, has a maximum value. Keep in mind, it had been talking about the maximum and minimum value of the function itself. Huh? That has been the point actually. Anyways, I would request to each one of you, I am going to show its graph, and with the help of graph, you must be able to judge it. You must be able to judge it. See how the graph has been. This one. So here comes your graph. And just by watching the graph, I would like to know from each one of you what must have been your answer. What must have been your answer? My dear friend, what must have been your answer? I had taken the same function which has been taken over the given problem. And that has been 4x square plus of 6y square minus. So probably you should not have any doubt. Sir, how did how did you draw this out? Okay. So what I have been doing? I have been trying to draw his outcome. How the outcome has been? The outcome is just been same as upper facing parabolite. Parabolite. What must have been the worst value of it? Obviously, if you'll go towards left hand side, right hand side, left hand side, right hand side, or even front and back, what would happen? The magnitude is been keep increasing. So this point is being the point where the minimum most value of the function is being achieved. If you want to know what has to be the value of x and y, you have to drop this point down towards x as well as y axis. You have to drop this point. But here they had not been focusing over that. They had been focusing over the minimal or maximum most value of the function. Tell me whether it would carry the minimal most value. Obviously, you won't be able to say the maximum most value, because as you will go towards left hand side, right hand side, front and back, the magnitude is being keep increasing. Agreed what I'm saying? Magnitude is being keep increasing, and that has been the point actually we had to focus on.
we had to focus on. Agreed, my dear friends? Obviously, it would carry a least value, and least value is just above 3, somewhere 10 by 3. So may I know what would be the best most answer? And now, this has been your choice. Tell me. Tell me what must have been the best most answer. Why there has been silence over this like chat? I don't like actually. We have been putting you the complete effort, and we need the effort from you guys as well. From you guys as well. So if you really wants to give the comment, for that you have to subscribe our channel. So you can subscribe. In future, definitely you are going to get this kind of content. This kind of content. Anyways, let me come back. The same process to be followed. What we have to do over here, my dear friends? We need to find the value of P, Q, R, S, and T. And from there, we will be able to conclude almost all important things. So first has been P. The first derivative of the given function, partial with respect to the x. Partially with respect to the x. Yes, partially with respect to the x. And once we do so, what had been the worth over here? It has been 8 of x minus of 8. Deliberately, they have chosen this kind of problem, no? Because the calculation won't be that difficult. And here comes the partial differentiation of f with respect to the x. So this becomes 12 times of y. 12 times of y, and this becomes minus of 4 only. Then comes s. Partial differentiation twice with respect to the x. So obviously, it has been s. PQ r is sorry, r has been r. So here comes r actually, yeah, r. Then comes s. What we will do, we will take the differentiation now. Either you differentiate with respect to the y, this is being 0, x, this is being 0. And then comes t actually, t. What we will do, we will take again the differentiation with respect to the what, y again. So it is being 12. If you find the stationary point, we had to compare with 0, and once we'll compare with 0, minus 8 goes towards right hand side, that becomes plus 8. Plus 8 divided by 8, that is been 1. And similarly here it is been 4 divided by 12, and that is been 1 divided by 3. So virtually speaking, the stationary point is been 1 comma 1 by 3. This has been the stationary point. But at this point, whether you will be finding a maxima minima, how will I know about it? That has to be known from RT minus of S square. What I'm saying, that has to be known from RT minus of S square. The value of R is being 8, T is being 12, and S is being 0. So obviously it is being greater than 0. So this point is going to be a point of extrema at any cost. Either it is been a maxima or minima, that has been the different story altogether. That solely depends on the function, but that is going to be extrema now. So this is been extrema. But at extrema, if the value of R is been greater than 0, obviously that is been. So this has been a point of minima. So over the entire range of x and y, only and only one minima you had. So that would be global minima as well. What I'm saying, so here comes x, here comes y, here comes z. The value of x has been 1. So it goes somewhere here. The value of y is 1 by 3. So at this point, you will be having a minima. So I would say the facing would be upper facing. The facing would be upper facing. Like this. As we have already had. If you want, I will show you that graph once again. The graph was something like this. Yes. Agreed, my dear friends? What had been this point? This point has been 1 comma 1 by 3. Anyways, what would be this point? This would be the worth of the function at x is equals to 1 and y is equals to 1 by 3. Or if I want to know the exact coordinate value of it, I will write 1 as x, 1 by 3 as y, and we will find the value of f as well. So here what I would do, f x as 1 by 3, we will feed that value over here. So 4, x has been 1, and then comes 6, 1 by 3 raised to the power of 2, then here goes minus of 8. What had been the x over here? The x has been again 1, and then comes minus of 4, y has been 1 upon 3, and that has been 8 now, and the worth has been 10 divided by 3, 10 divided by 3, 10 divided by 3. It has been comparatively vague question. Why?
because such a complex calculation has been required, at least at this moment of point. At least at this moment of point. Agreed? No, till this point, I don't find any of the student would have any kind of doubt now. So I think it's been the right time. I should also be focusing on the question number 4 as well. Focus over this question and tell me what must have been the best most answer for this given question. Read the problem carefully and tell me what must have been the best most answer. Tell me what must have been the best most answer. So here comes the next question as well. Here comes the next question as well. The fourth has been the next question. Read the problem carefully and tell me what must have been the best most answer. The continuous function. The function has been continuous. Nowhere it has been a discontinuous. Or said to have a saddle point. Saddle point has already been discussed. Graphically we had shown. And similarly, fundamentally also we have seen about it. So when you will be having a saddle point, my dear friend, this, for the saddle point at least, the slope of the given function with respect to the x and y has to be 0. So here the f of x or f of y, it is been written, no? So wherever the f of x has been written, it indicates the differentiation of the function partially with respect to the x. Same goes with f of y and same goes with f of z as well. Yes, same goes with f of z as well. Yes, so till this point, I don't find any of the problem as such. Agreed, no? So, obviously, the first derivative of the function and first derivative of the function with respect to the x as well as y at the stationary point, let's take that is been a comma b, has to be 0. So obviously this is to be satisfied at any cost. But rt minus of s square or s square minus of rt minus of s square has to be negative or s square minus of rt has to be positive. In this problem, what they had done, no, they had just focused over the s square towards left hand side. So don't get confused. Don't get confused. So may I know what has to be the best most answer? The B has to be the best most answer. If they must have been given rt minus of s square, definitely that value must have been lesser than 0. But rather giving rt minus of s square, they had focused over the s square minus of rt. S square minus of rt. I would request each one of you, this concept must have been clear to all of us. This concept must have been clear to all of us. And tomorrow we will take the next concept as well. Tomorrow we will take the next concept as well. Agreed? Okay then. This is all in the today's class. We will meet tomorrow. Till then, bye-bye. Take care.
हेलो एवरीवन, एक बार वीडियो और ऑडियो एक बार फटाफट कमेंट कर देंगे क्वालिटी से। परफेक्ट है ना? उसके बाद अपन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं आज की क्लास में। साहिल, सैडल पॉइंट तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मजा आया होगा, है ना? थोड़ा सा कमेंट करके बता दो कैसा लगा। चलो, फिर अगर कमेंट करो तो कमेंट दिख नहीं रहा है मेरे को। अगर कमेंट करेंगे सबके सब मेन चैनल में यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड गेट एकेडमी। तो जैसा अभी हम एक फिजा बना के रखे हुए हैं ईएमएफटी के रिगार्ड्स, बस उसी फिजा में आज कुछ और भी क्वेश्चंस लेके ईएमएफटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन के कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। करीबन करीबन 6 से 7 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में लिए हुए थे। उसी कंटिन्यूएशन में 6 के बाद ये सातों क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में ये वर्कबुक डाल दिया है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिला होगा तो कोई इशू लेने की नीड नहीं है। मैं आज जैसे ये क्लास खत्म होता है फिर से पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप लोग कम से कम रेफरेंस लेके क्वेश्चन जो है मेरे साथ सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो विदाउट फर्दर डिले लेट मी फोकस ओवर द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू 0। सिग्मा का 0 होना है, मीडियम का लॉसलेस होना। म्यू है 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया है कि हमेशा हमेशा रिलेटिव वैल्यूज के साथ अलग से डील करें। अगर आप म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू पावर ऑफ -7 लेके पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस करने लगेंगे तो इट वुड बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एप्सिलॉन में आप ये देखें कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इस प्रॉब्लम में 5 है। एच दिया हुआ है एंड दैट इज बीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मुझे ओमेगा एंड ई निकालना है। फटाफट रीड करेंगे इस प्रॉब्लम को और बताएंगे मेरे को बेस्ट मोस्ट आंसर इस प्रॉब्लम के लिए क्या होगा। बट आई एम सेइंग सिग्मा इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है लॉसलेस। मैं तो ये बोलूंगा कि केवल म्यू आर और एप्सिलॉन आर पे फोकस करें। आगे जाके बस इसी का यूज करके अपन पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। यहां दिया हुआ है आपको एच, और इस एच का रेफरेंस लेते हुए आपको ओमेगा और ई की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा और ई की वैल्यू निकालनी है। फटाफट बताएंगे व्हाट मस्ट बी द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। चलिए, टाइमर दूं मैं आप लोगों को? नहीं, 1 मिनट के अंदर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। बताओ क्या होगा इसका आंसर। Read the problem carefully and tell me what could have been the best most answer for this given question. For this given question. कैलकुलेटर अपने सामने रखो। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपको सॉफ्ट कैलकुलेटर नहीं, हार्ड कैलकुलेटर सामने रखो और सामने में स्क्रीन रखो। बताओ इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। देखो भैया, एक चीज तो क्लियर है कि इस प्रॉब्लम में आपको दो अलग अलग डिटेल्स पूछी गई हैं। एक है ओमेगा एंड दैट इज बीन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और दूसरा है इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बिहाफ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू। देखो, ओमेगा निकालने के लिए एक लमसम आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ओमेगा कैसे निकलेगा, कोई बताएगा मेरे को? ओमेगा, हाउ विल आई गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा? बोले, हाउ विल आई गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा? देखिए, ओमेगा निकालना एकदम आसान था। आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है वीपी एंड दैट इज बीन द फेस वेलोसिटी। हाउ द फेस वेलोसिटी इज बीन डिफाइंड? It has been defined as 1 divided by of square root of mu into epsilon in lossless medium। एक कम करते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर को आइसोलेट कर लेते हैं। इससे जिंदगी मेरी थोड़ी आसान हो जाएगी। सो व्हाट आई हैड डन, आई हैड रिटन दिस एज अ रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू आर एप्सिलॉन आर।
मैं हमेशा आप लोगों को बोलता आया हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए आप थोड़ा सा रेमेडी बना के चलो। आपको ये पता होना चाहिए 1 डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एंड दैट इज बीन द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power of 8। सिमिलरली रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है 120 पाई या 377 ओम। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज फीड करना चालू किए तो आप बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग, दिस वैल्यू इज ऑलरेडी बीन नोन टू मी एंड दैट इज बीन 3 into 10 has been raised to the power of 8 रूट ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। यहां है वैल्यू 5 और यहां है वैल्यू 2, ये हो जाएगी रूट ओवर ऑफ 10, रूट ओवर ऑफ 10। ठीक है, दोनों का अपन डिवाइड कर लेते हैं तो ये होगा 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 10 और ये वैल्यू कुछ आ रही है 0.948, 0.948 इंटू 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन वीपी आपने लॉसलेस मीडियम के लिए कैसे निकाला था, ओमेगा और बीटा को डिवाइड करके। तो इस प्रॉब्लम में बीटा तो आपको बिल्कुल दिख रही है, बीटा इज बीन 3, फेज शिफ्ट कांस्टेंट 3 है। ओमेगा और बीटा को डिवाइड करना था केवल, सो ओमेगा और बीटा की डिवीजन की बात आती है। सो ओमेगा ओवर बीटा, बीटा इज बीन 3 is going to get multiplied with 0.94 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। 0.94 को मैं 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ, वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 2.84 के आसपास। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, 2.846 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 रेडियन पर सेकेंड। तो एटलीस्ट ओमेगा की वैल्यू तो इस प्रॉब्लम में निकल चुकी है। रूल आउट हो गया डी, रूल आउट हो गया बी, रूल आउट हो गया ए। तो वैसे भी आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते थे। सी मस्ट हैव बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। क्यों नहीं आया अभी तक इसका आंसर? सबका आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक यार। क्या ही कर रहे हो तुम लोग, ईएमएफटी की तैयारी कर रहे हो, ऑलरेडी गेट का एग्जाम आप लोगों के सामने आ गया। ये सब कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों के फिंगर टिप्स में रखी होनी चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। देखिए ओमेगा निकल जाने के बाद इन फ्यूचर ओमेगा आप चाहें तो एच के लिए भी रख सकते हैं और ई के लिए भी रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, अगर आपका वेव लॉसलेस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो थीटा का पार्ट जो है वो चेंज नहीं होने वाला। ओमेगा टी एज इट इज कॉपी करो, माइनस ऑफ बीटा वाई एज इट इज कॉपी करो। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ओमेगा की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल रखी है 2.846 इंटू 10 पावर ऑफ 6। ये डेटा आप जैसे ही फीड करेंगे ये डेटा यहाँ आ गया और माइनस ऑफ 3y एज इट इज आ गया। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम में आपने आंसर नहीं निकालना है, पूरा एनालिसिस करके आप ये मानो ना कल के दिन को जरूरी है ना ऑप्शन यही हो। ऑप्शंस बहुत आसपास के भी हो सकते थे, हो सकता था ये डेटा 2 या 3 में कॉपी होता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होता, मे भी हो सकता है पोलैरिटी अलग होता, तो आप उसके लिए तो प्रिपेयर करेंगे ना। ठीक है, कर लेते हैं सर। देखिए अगर इस प्रॉब्लम में और ढंग से देखें आप पाएंगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा और हमेशा एजेड कैप के डायरेक्शन पे है। सो वर्चुअली स्पीकिंग यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बीन एजेड कैप। प्लस और माइनस इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कोसाइन अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो प्लस होगा, पाई बाई 2 प्लस में माइनस होगा, बट वर्चुअली स्पीकिंग हमेशा और हमेशा ये एजेड कैप के डायरेक्शन पे होगा। माइनस ऑफ 3y, हाँ ये जरूर इंश्योर कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ए के कैप माइनस कर लेते हैं आप प्लस, ये केवल प्लस ए वाई कैप के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वर्चुअली स्पीकिंग पॉइंटिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए ए के कैप हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ ए ई कैप क्रॉस ऑफ ए एच कैप। जहां ए के कैप है इट इज बीन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ए की ए ई कैप है इट्स बीन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द ईएम वेव, एंड सेम गोस विद द ए एच कैप एज वेल। देखो मैं जब स्टडी कर रहा हूं मैंने माना है ओमेगा टी माइनस ऑफ 3y जो है वो 0 है, उस टाइम पे ये होगा प्लस ए जेड कैप, ये तो अग्री करेंगे, ये होगा प्लस ए जेड कैप। ठीक, ए के कैप तो हमेशा और हमेशा ए वाई कैप के डायरेक्शन पे है। तो आप ये बताएं मेरे को उस समय आप ए ई कैप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? उस समय आप ए ई कैप एक्सपेक्ट करेंगे माइनस ऑफ ए एक्स कैप, तब जाके इसका मल्टीप्लीकेशन ए जेड कैप होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आप जब मैग्नीट्यूड निकाल लोगे उसके बाद जब डायरेक्शन फीड करने की बात आएगी तो ये माइनस ऑफ ए एक्स कैप फीड करेंगे। देखो अब मेरे को लगता है कि एक बेसिक मिस्टेक और भी होता है। बच्चा बोलेगा कि सर E और H के बीच का रिलेशनशिप इज ऑलरेडी बीन नोन एंड दैट इज बीन ईटा, दैट इज क्वाइट ओके। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ E एंड H है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, या फिर मैं बोलूं पीक मैग्नीट्यूड ऑफ E एंड H है, कंफ्यूज मत होना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E नॉट आपने निकालनी है, चलिए निकाल लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। H नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इट इज बीन 2 नाउ, और ये वैल्यू कितनी होगी 120 पाई, नहीं 120 पाई नहीं होगी, इट इज बीन रूट ओवर ऑफ म्यू इनटू एप्सिलॉन। रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है जो लीड करती है 120 पाई। अब बचेगा रूट ओवर ऑफ म्यू आर और एप्सिलॉन आर। म्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी आपने पता ही है, इट इज बीन 2, और सिमिलरली एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा ही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ म्यू और एप्सिलॉन यूज किया नहीं किया ना, अगर यूज करोगे तो प्रॉब्लम जो है वो बेकार में
क्लमजी होता जाएगा। तो ये होगा 120 पाई गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5। ये वैल्यू आ रही है कुछ 238 के आसपास, 238.43 के आसपास। दिस इज बीन द वर्थ ओवर हियर। अब अपने को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है भाई, अपने को निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं करना है, 2.3843 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये वैल्यू आ रही 476 के आसपास। देखो कितनी आ रही, 476 के आसपास। दिस वर्थ इज बीन E naught, magnitude of E naught is been 476.86। देखो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ E naught निकाला है, पूरा का पूरा E वेक्टर नहीं निकला है। पूरा का पूरा E वेक्टर निकालने के लिए आपको पॉइंटिंग थ्योरम को भी सेटिस्फाई करना होगा और पूरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो देखें, अगर आप E वेक्टर निकालते हैं तो ये तो क्लियर हो गया, ध्यान देंगे थोड़ा शांति के साथ। वेव अगर y के डायरेक्शन में चल रहा है तो चेंजेस भी y के कारण ही आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समय का मोहताज होगा, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है। यस, आगे बात समझ में। E ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E नॉट। ये मैग्नीट्यूड है मेरे भाई, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 476.86। दिस डेटा इज टू बी कॉपीड एज इट इज, सो हियर इट बिकम्स cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 3y। ये अब इसके आगे आप लोगों को लगाना है अपना विवेक और ये वैल्यू आने वाली है माइनस ऑफ ax कैप, माइनस एंड हियर कम्स ax कैप, और ये है आप लोगों का शानदार सा आंसर। This has been the answer now. This has been the answer now. Did you really understood what exactly I wanted to communicate? Answer क्यों नहीं आ रहा है? आंसर सबका आना चाहिए मेरे भाई लोग, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो आप लोगों का जो बेस्ट मोस्ट आंसर होगा वो सी होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस तो फ्रेम नहीं किए जाएंगे जहां ऑप्शंस के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंसेस हो। हाँ, आसपास के ऑप्शंस जब क्रिएट किए जाएंगे तो चांसेस हैं कि आप लोग मिस्टेक कमिट करेंगे। पहला मिस्टेक पोलैरिटी में हो सकता है, दूसरा मिस्टेक ओमेगा निकालने में हो सकता है, तीसरा मिस्टेक हो सकता है आप म्यू और एप्सिलॉन आर की यूज जो कर रहे हैं ना यहाँ वीपी निकालने के लिए और ईटा निकालने के लिए, वो शायद ना कर पाए। तो सब लोगों को क्लियर है और फटाफट बता दो मेरे भाई लोग। चलिए, इन द सेम सीक्वेंस हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से रीड करेंगे, प्रॉब्लम को बताएंगे, वेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। ईएसी इलेक्ट्रिकल 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ईएसी में 7-8 साल पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड के क्वेश्चंस भी आते थे, तो वहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस ले आया है कि मैं आप लोगों को कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस भी एक्सपीरियंस करा पाऊं। देखो प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, द ई फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, उसका एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम में क्लियरली गिवन है। इन अ नॉन मैग्नेटिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज गिवन बाय। नॉन मैग्नेटिक का मतलब होता है म्यू आर की वैल्यू का 1 होना। बहुत ज्यादा मटेरियल साइंस पे बात नहीं करूंगा। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है सिग्मा की वैल्यू का 0 होना। अब इस ई वेक्टर का रेफरेंस लेते हुए मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है। फटाफट रीड करें और बताएं इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। फटाफट रीड करें और बताएं बेस्ट मोस्ट आंसर क्या ही होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इस प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन मैग्नेटिक, कभी भी प्रॉब्लम में नॉन मैग्नेटिक लिखा हुआ होगा, आप पूरे के पूरे EMFT में कहीं भी स्टडी कर रहे होंगे तो आप आंख बंद करके ले लें म्यू आर की वैल्यू को 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज बीन फाउंड टू बी 1 एंड सेम गोस विद द नॉन कंडक्टिंग। व्हाट डज दैट मीन बाय द नॉन कंडक्टिंग? सिग्मा की वैल्यू का 0 इंश्योर करना। वैल्यू ऑफ सिग्मा इज बीन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बीन क्लियरली गिवन अलोंग विद दिस प्रॉब्लम, और इसका रेफरेंस लेते हुए आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाल के देनी है। एप्सिलॉन आर बताएं क्या होगी इसकी वैल्यू, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। अच्छे से रीड करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। टेल मी व्हाट मस्ट हैव बीन द आंसर ओवर हियर, क्या होता है इसका आंसर। कहां से निकालोगे एप्सिलॉन आर? अरे सीधे सीधे दिख रहा था, कुछ भी नहीं था इसमें। आपको ओमेगा नोन है, आपको बीटा नोन है, आप वीपी निकाल सकते हो आसानी से इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम की डिटेल्स के साथ। टेल मी व्हाट मस्ट हैव बीन द आंसर, देखें होगा क्या। As we know, the ratio between the operating frequency of the electromagnetic wave over the phase shift constant beta is being the phase velocity of the electromagnetic wave. ठीक, इस फंडामेंटल को यूज करके ओमेगा और बीटा को अपन डिवाइड कर देते हैं। तो ये होगा 10 to the power of 9 और ये होगा 30। 10 to the power of 9 को मैं लिख रहा हूं 10 into 10 to the power of 8 divided by of 30।
बीटा की वैल्यू यहाँ मैंने ले आई, और ये वैल्यू निकल के आ रही है 1/3 ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 8, जो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, तो ये हो गया 1/3, है ना। चलिए, तो ये होगा 1/3 ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 8। वीपी को अगर म्यू आर और एप्सिलॉन आर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होती है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, अभी जस्ट पहले देखा ना, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है कि जिस मटेरियल में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है वो नॉन मैग्नेटिक है। म्यू आर की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ गया एप्सिलॉन आर। यस सर, देखो एक स्टेप और आगे जाते हैं। लेफ्ट राइट में 10 टू द पावर ऑफ 8 वाला टर्म जो है मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, 3 जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ऑफ एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकल के आ रही है 9 टू द पावर ऑफ 2, और वो होगी 81। यहाँ भी कई चांसेस है कि कई बच्चा जो है 3 मार्क के आगे चला जाएगा, विच वुड बी रॉन्ग एक्चुअली। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, आप स्क्वायर लेंगे दोनों साइड, तो 9 का भी स्क्वायर होगा, एंड दैट वुड लीड द वैल्यू एज 81। दैट वुड लीड एज 81। मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, यस अंजलि बिल्कुल परफेक्ट है, डी इज बिन द बेस्ट मोस्ट आंसर। अंजलि ये बताएंगे मेरे को इसके बिहाफ में आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे क्या, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी निकाला जा सकता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक थंब रूल है, वैसे कुछ आगे के 2-3 क्वेश्चंस में आप लोग स्ट्रगल करोगे, ये तो बहुत क्लियर है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आए। तो सबसे पहले ये वाले टर्म को चेंज करने की नीड नहीं है, अगर आप लॉसलेस मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। सो आप ये टर्म तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी करें। सो ई वेक्टर जो होगा, ई वेक्टर की बिहाफ में अगर आप एच वेक्टर निकालते हैं तो एच वेक्टर में ये टर्म तो बिल्कुल कॉपी होने वाला, ये होगा cos 10 टू द पावर ऑफ 90 प्लस ऑफ 30z। ठीक, ये बात अलग है, इस ई नॉट का रेफरेंस लेते हुए आपने एच नॉट निकालनी है। कैसे निकालेंगे अभी ये भी देख लें। तो ई नॉट से एच नॉट निकालने के लिए अपन यूज करते हैं ईटा का, जो होता है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, जिसको मैं बोलता हूं वेव इंपेडेंस। ई नॉट डिवाइडेड बाय ऑफ एच नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं भाई, दोनों के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है वो होता है ईटा के बराबर। ठीक है सर, ईटा अगर मेरे को पता हो तो ई नॉट से एच नॉट निकाल सकता हूं और एच नॉट से ई नॉट निकाल सकता हूं। ई नॉट तो दिया हुआ है, ईटा को यहां बुला लो, तो ये होगा 5 डिवाइडेड बाय ऑफ ईटा। हाँ, थोड़ा सा डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। डायरेक्शन पे बात करने के लिए अपन को सीधा जाना होगा पॉइंटिंग थ्योरम पे, एक कैप एंड दैट इज बीन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज इक्वल्स टू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अगर ये डेटा अपन को फीड करना रहा तो आप ये बताएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो माइनस एजेड कैप के डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है। कैसे? प्लस का मतलब माइनस होता है और जेड का मतलब एजेड कैप होता है। आगे जाके मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा जरूरत पड़ी तो। ये होगा माइनस एजेड कैप। देखिए अभी एटलीस्ट जिस मूवमेंट और जिस स्पेस पे आप काम कर रहे हैं, आप ये मान के चल लिया आपने ओमेगा टी प्लस ऑफ बीटा जेड की वैल्यू 0 है। आपको केवल किसी एक कंडीशन पे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी है एक है, बाकी सब अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने इसको 0 रखा है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर क्या होगा 5ax कैप। तो उस समय अगर यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये होगा प्लस ax कैप। Could you really understood what exactly I wanted to communicate? कई बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है वो प्लस एक्स कैप होगा क्योंकि यहाँ नहीं मेरे भाई, कल के दिन अगर ये ओमेगा टी और बीटा जेड चेंज हुए होंगे क्यों नहीं होंगे। ओमेगा टी का मतलब टाइम तो बीतता जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर टाइम बीतता जाएगा तो हो सकता है ये पूरा का पूरा टोटल एंगल जो है वो π/2 से आगे चला जाए, और π/2 से आगे चला गया तो कॉस नेगेटिव हो गया। वो तो छोड़ दो, हो सकता है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करके ट्रांसमिट करेगा। आप ऐसे जेड पे चेक कर रहे हो कि फिर से वैल्यू अगर मान लो π/2 से बढ़ी रही तो फिर से निगेटिव हो जाएगा। तो आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पर प्लस लगा है तो हम यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लेंगे। एक्चुअली में ये गलत अप्रोच होता है। आप ये मान के चलो कि किसी भी एक पॉइंट और किसी भी एक टाइम पे स्टडी कर रहा है। पॉइंट मैंने ले लिया z = 0 और टाइम मैंने ले लिया t = 0, तो ये 0 हो गया। अब ये आया 5ax कैप, और 5ax कैप में अगर यूनिट वेक्टर देखेंगे तो प्लस ax कैप के डायरेक्शन पे होगा ये। अब बताएंगे मेरे को उस समय एज कैप क्या चाहिए होगा। उस समय चाहिए होगा माइनस ऑफ ay कैप। तब जाके मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो माइनस az कैप के डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी माइनस और ये होगी ay कैप, ये होगी ay कैप। और ईटा निकालना बड़ा आसान था। कैसे निकलेगा ईटा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिलेटिव वैल्यूज के साथ किसी को डील नहीं करनी। देखें, सो ईटा फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए इज ऑलरेडी बीन नोन। तो यहाँ ईटा होगा
120 पाई square root of mu or epsilon r. Mu r being a non-magnetic material, it's been 1 और epsilon r की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, and that is been 81. ये वैल्यू होगी रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइड बाय 81, दैट इज बीन 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 9. 1 डिवाइड बाय 9 को अपन 120 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे. ये है 3 4 जा 40. ये कुछ इस तरीके से आप चाहें तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें इसकी, और ये वैल्यू आ रही है 40 डिवाइड बाय 3, 40 डिवाइडेड बाय 3, और ये वैल्यू है 13.33 समथिंग. तो ये वैल्यू निकल गई. देखिए 13.33 cos 10 to the power of 9t plus of 30z ay cap. Yes, ठीक है. चलिए इसी सीक्वेंस में आई थिंक इज बिन द राइट टाइम वी शुड बी फोकसिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. यस, परफेक्ट अंजलि, परफेक्ट. तो फोकस ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. और मुझे लगता है कि इस तरीके की क्वेश्चन है जिसमें आप लोग डेफिनेटली थोड़ा सा सीख करोगे, डेफिनेटली. और इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं आप लोगों को 2 से 3 मिनट का समय. देखो अभी तक क्या होता था, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल कंपोनेंट एक्स वाई या जेड की तरफ होता था, लेकिन अब इस प्रॉब्लम में वेव जो है वो जेड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव जेड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट है, एक्स के डायरेक्शन पे और वाई के डायरेक्शन पे. ये किस तरीके का कंडीशन हो सकता है, सोच के देखो. मैंने लिया है इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप पॉइंटिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एड्रेस कर सकते हैं. वेव जो है वो पॉजिटिव एजेड कैप के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. यूजुअली मैंने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स और मैग्नेटिक फील्ड केवल वाई, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल वाई और मैग्नेटिक फील्ड केवल एक्स के डायरेक्शन में होता था, लेकिन केस इज बिन बिट डिफरेंट. अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कैप का भी कंपोनेंट और ए वाई कैप का भी कंपोनेंट है, कुछ इस तरीके का. और ये कंपोनेंट इस तरीके के हैं कि कभी हो सकता है कि समय और टाइम बढ़े तो ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो और ये वाला कंपोनेंट छोटा हो, या फिर ये वाला छोटा हो और ये बड़ा हो. वर्चुअली स्पीकिंग आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सर्कुलर पोलराइजेशन का है. मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो नहीं अभी, क्योंकि पोलराइजेशन पढ़ाया नहीं हुआ है, सर्कुलर पोलराइजेशन का है. कभी एक्स का कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट 0 है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, अगर आप जिस टाइम पे और जिस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं वहां अगर ये वैल्यू 0 है, बोले तो कौन सी, एंगल वाली, तो ये तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, लेकिन ये 0 नहीं है. और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ए वाई कैप के डायरेक्शन पे. जैसे जैसे ओमेगा टी प्लस और बीटा जेड बढ़ता जाएगा, आप पाएंगे कि ये बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा. और अगर ये बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा तो एक्स का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा और वाई का कंपोनेंट घटता जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? पहले केवल इस डायरेक्शन पे था. तो ओवरऑल कैसा होगा, जैसे जैसे ओमेगा टी और बीटा जेड बढ़ेगा ना, एक कंपोनेंट बढ़ रहा है और एक घट रहा है, लेकिन मजेदार चीज ये है इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. कैसे कांस्टेंट है? अगर आप इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो होने वाला है कंपोनेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसका पूरा का स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ वाई का स्क्वायर, इसका पूरा का पूरा स्क्वायर. और उस समय ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. वाई? साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज बीन 1, और ये वैल्यू कांस्टेंट है. इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी एक्स के कंपोनेंट को बढ़ा रही है, फिर वाई के कंपोनेंट को बढ़ा रही है. वर्चुअली स्पीकिंग मैग्नीट्यूड तो हमेशा और हमेशा इसका सेम ही था. डिड यू रियली अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट? तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, मेरे को लगता है कि ग्राफिकली इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझा देता हूं, आप लोगों के लिए आसान होगा. वेव प्लस एजेड कैप के डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है. प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैंने एजेड कैप बाहर ले लिया, एंड लेट्स टेक it has been x axis, it has been y axis, and the z axis has been the axis which has been coming out from this xy plane. मैंने लिया इसको x axis और मैंने लिया इसको y axis. मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E वेक्टर की. लेट मी फोकस ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E वेक्टर. ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर. बताएंगे ये वैल्यू क्या होगी? एक्स कैप के कंपोनेंट का या एक्स के डायरेक्शन पे कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई के डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर. ये होगा कुछ इस तरीके का, जो अपन बेसिक वेक्टर कैलकुलस में यूज करते थे. वो है 10 साइन, और आपने ध्यान दिया होगा ये कंपोनेंट लेफ्ट और राइट में सेम ही है. ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा. तो समय कुछ भी हो, स्पेस में लोकेशन कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा इनका स्क्वायर ऐड होके यूनिटी ही बनाएगा.
और यूनिटी बनाने के कारण इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखें 10² आप कॉमन निकालें और ये वैल्यू हो जाएगी 1 और मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया 10। अगर वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है तो वोल्ट पर मीटर ही लिखूंगा मैं। देखो कुछ इस तरीके का। यस, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने लिया है ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड की वैल्यू को 0। व्हाट आई एम सेइंग एट वेरी बिगिनिंग आई हैव टेकन ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड इज इक्वल टू 0। तो ये केवल किस डायरेक्शन में दिखेगा आपको, ए वाई कैप। और मैग्नीट्यूड ना कुछ भी हो जाए चेंज नहीं हो रहा। अगर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो जाए चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा और हमेशा ओरिजिन से सेम होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का केस है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड की वैल्यू 0 और उस टाइम पे आपको केवल डायरेक्शन देखने को मिल रहा है ए वाई कैप के डायरेक्शन में। देखो ए वाई कैप के डायरेक्शन पे। देखिए अब एक दूसरी वैल्यू ले लेता हूं। लेट्स टेक ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड इज बिन पाई बाई 2। तब देखने को मिलेगा ये 0 हो चुका होगा और ये देखने को मिलेगा आपको प्लस एक्स कैप के डायरेक्शन पे, प्लस एक्स कैप के डायरेक्शन पे। सिमिलरली अगर आप पाई ले लेते हैं, पाई के टाइम पे ये वैल्यू होने वाली 0 और ये कुछ इस तरीके से है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना सब चीज आप लोगों को। तो 0 में कहां रखा हुआ था भाई, 0 में आप बैठे थे ए वाई कैप पे, पाई बाई 2 पे आप कहां बैठे हैं, यहां पर। एंड सिमिलरली आई रिपीट आप पाई पे बैठे हुए यहां पर, वहां पर, ये कुछ इस तरीके से। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो रोटेट कर रहा है। मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो या करस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, ये रोटेट कर रहा है। रोटेट करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अभी भी कहां की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। आई रिपीट, अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव एजेड कैप के डायरेक्शन पे आ रहा है। ये आपका एरिया ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये पूछूं, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस पे, लेट्स टेक मैंने ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड को ऑलरेडी थीटा ले रखा है। जैसे मैंने लिया थीटा इज इक्वल्स टू 0 रेडियन, 0 रेडियन। आप देख रहे हैं कि लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था। उस समय मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा ये बताओ ना मेरे को। उस समय भी आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पे था ना और आपको वेव इस डायरेक्शन पे लेके जाना है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा। सो वर्चुअली स्पीकिंग जैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलरली रोटेट हो रहा था एक्स वाई प्लेन पे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट होगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये प्रॉब्लम कल के दिन पूछा जा सकता था पोलराइजेशन के केस में भी। विच काइंड ऑफ पोलराइजेशन इट इज बीन अ सर्कुलर पोलराइजेशन। और अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लेस करना होता है अपना थंब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि आप अगर थंब को प्लेस करते हैं बाहर की तरफ, रोटेशन उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मिला था, तो अपन लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड का केस, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड का केस। यस और नो, बताएं इसका आंसर क्या होगा। व्हाट मस्ट बी द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। बताएं क्या होगा इसका आंसर और कैसे ही निकालोगे आप। हाउ शुड आई कैलकुलेट दिस वैल्यू, हाउ शुड आई कैलकुलेट दिस वैल्यू। देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए ना आप ईटा का यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ईटा जस्ट टॉक्स अबाउट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ चूंकि दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, आप मैग्नीट्यूड निकाल भी लोगे ना, एडजस्ट कर पाना इज बिन बिट डिफिकल्ट। कैसे ही करोगे, देखो एकदम सीधा सा तरीका था। वापिस से आते हैं बेसिक फंडामेंटल्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल। देखिए आपने ऑलरेडी पॉइंटिंग थ्योरम से निकाल रखा था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ए के कैप इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं ये बोलता हूं कि उसको एकदम जेनरिक फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए ए के कैप को क्या लिखा जा सकता था, के वेक्टर, जिसको मैं बोलता हूं वेव वेक्टर, डिवाइडेड बाय ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर जो होता है बीटा, जो होता है बीटा, एंड दैट इज बीन द फेज शिफ्ट कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू ए ई कैप को लिखा जा सकता था ई वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा, एंड सिमिलरली क्रॉस एच वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एच। देखो मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं ना, तो कल के दिन ईटा ब्रॉड बैक करना बड़ा आसान होगा। देखो इस प्रॉब्लम में ई निकालना है, एच निकालना है, एच निकालना है, ई दिया हुआ है। तो ये बताओ ना मेरे को, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ऑलरेडी पता है, अगर ये एजेड कैप होता, मान के चलो एक तरीका बता रहा हूं याद करने का, ये एक्स कैप होगा और ये ए वाई कैप होगा। आपने निकालना है क्या इस प्रॉब्लम से, एज कैप, बोले तो ए वाई कैप बाहर की तरफ निकालना है। ये बताएंगे मेरे को ए के और ये कनेक्ट कैसे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कनेक्ट होने वाला है
एजेड कैप, एजेड कैप कितना है मेरे भाई, ए के कैप क्रॉस ऑफ एक्स कैप जो होगा ए ई कैप। तो यहां से भी अपन सेम ही चीज करेंगे। देखो एच कैप को अपन लिख सकते हैं एच वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एच, मैग्नीट्यूड ऑफ एच, के वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ के जिसको मैं बीटा बोलूंगा, और ई वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ई। देखो कितना आसान होगा इसके बाद कैलकुलेशन। तो ये इतना सब कर लोगे। अंजलि आगे आंसर, चलो ग्रेट। अंजलि थोड़ा सा तरीका ध्यान रखो, आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें। तो आप यहां से पूरा का पूरा एच वेक्टर निकालना चाहते हैं। अब आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कुछ नहीं निकालना चाहते, आप चाहते हैं कि एक वन शॉट इक्वेशन हो जिसमें आप डेटा प्लग करें और आउटपुट जो हो वो आपका आंसर हो। तो देखें वो क्या रहा है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एच वेक्टर को आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ई वेक्टर और एच वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो ईटा होता है, लेकिन यहां तो एच नॉट एच ऊपर है तो होगा 1 अपॉन ईटा, 1 अपॉन ईटा। यस यस सुनो, यस सर 1 अपॉन ईटा। और साथ में यहां पर क्या होने वाला है भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर को मैं लिख सकता हूं बीटा अगर चाहूं तो, और यहां होने वाला है के वेक्टर क्रॉस ऑफ ई वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस ऑफ ई वेक्टर। दूसरा तरीका और भी था, देखो दूसरा तरीका ये भी था, आप के वेक्टर को अगर बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा क्या, ए के कैप ही आएगा। तो आप क्या करें, इसको सीधा लिखना है यार, इसको लिखें ए के कैप क्रॉस ऑफ ई वेक्टर, पूरा का पूरा ई वेक्टर लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ऑफ ईटा, डिवाइडेड बाय ईटा, और ये निकला है आपका एच वेक्टर। बट आई एम सेइंग दिस इज बिन द एच वेक्टर। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा अगर एच वेक्टर की जगह में ई वेक्टर निकालना होता एच वेक्टर से तो आपका अप्रोच क्या होता। एंड दिस हैज बीन अ वेरी वेरी क्रूशियल आउटकम एंड दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय ईच वन ऑफ अस। आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना होगा इसको। इज दैट पार्ट क्लियर? अब मुझे लगता है कि किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट मी ब्रिंग द रिमोट आउट, कहां गया, ये रहा। चलो देखो इस प्रॉब्लम में अगर आप ढंग से समझेंगे तो कुछ डेटास तो क्लियर है। क्या डेटास क्लियर है, ध्यान देंगे। AK cap, AK cap has been clearly known. What had been the AK cap? The wave has been traveling in the direction of plus AZ cap. AK cap पूछ रहा है ना, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, पूरा का पूरा वेक्टर मत ले आना। तो ये हो गया प्लस AZ cap क्रॉस ई वेक्टर। अरे भाई कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा ई वेक्टर उठा के कॉपी पेस्ट मारो ना यहाँ पर। ये देखो इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, कॉपी पेस्ट मारने के लिए इधर की तरफ लेके जाते हैं। चलो ये 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 पूरा का पूरा ई वेक्टर जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट होने आया है। और प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है यार, ये देखो 370 377 देख के ही लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो फ्री स्पेस का। नहीं समझ में आ रहा तो वो भी देख लो। देखो जब आप ओमेगा और बीटा को डिवाइड करने के बाद वीपी की वैल्यू 3 × 10⁸ आई है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम किसका था, फ्री स्पेस का था। यस सर फ्री स्पेस का था। कुछ नहीं करना था, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था और नीचे लेके आना था 377। दैट्स इट। देखें अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए जेड का ए एक्स कैप के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस ऑफ ए वाई कैप, ये होगा -10 साइन 3 पाई 10⁻⁸ माइनस ऑफ पाई जेड ए एक्स कैप माइनस होगा। सिमिलरली ए जेड का ए वाई के साथ माइनस ऑफ ए एक्स कैप होगा, ये भी समझ में आ रहा है सब लोगों को। ये होगा माइनस ऑफ ए एक्स कैप, ये होगा माइनस ऑफ ए एक्स कैप 10 cos 3 पाई माइनस ऑफ पाई जेड। हाँ लेकिन साथ में 377 डिवाइड करना मत भूलना। ये 377 क्या है इसका बेस्ट मोस्ट आंसर, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? यस 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 यस। देखो आंसर कितना आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है तो चेक कर लो एक बार, फटाफट चेक करो। ए के कैप यस ए के कैप इज बीन प्लस ए जेड कैप, दैट इज फाइन। ए जेड कैप ई वेक्टर देख लेते हैं, ई वेक्टर है ओके ओके फाइन है फाइन है फाइन है फाइन है। देखो फाइन है, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, ए जेड क्रॉस ए एक्स प्लस होगा और ये होगा वाई कैप, ये कुछ इस तरीके का ए वाई कैप।
तो अभी आंसर अगर आप चेक करोगे तो आंसर जो है वो कौन सा आएगा, चेक कर लेता हूं मैं। प्लस आएगा ए वाई कैप में और सिमिलरली माइनस आएगा ए एक्स कैप में। ए इज बीन द आंसर, ए इज बीन द आंसर। यस, चलो इसी सीक्वेंस में आई शुड आल्सो टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। और ये प्रॉब्लम जो है वो एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ वेव इज in free space is given by E is equals to 10 cos 10 to the power of 7t plus kz ay cap volt per meter. It can be inferred that, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बगल हो रहा हूं आप लोगों को, सब लोगों का आंसर चाहिए होगा मेरे को फटाफट, सब लोगों का आंसर चाहिए होगा मेरे को फटाफट। और एमएसक्यू है, थोड़ा भी हड़बड़ी में आंसर मत देना क्योंकि एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, ये एमएसक्यू है। चलो बताएं मेरे को क्या होगा इसका आंसर। The electric field component of wave in free space is given by E is equals to 10 cos 10 to the power of 7t plus kz ay cap volt per meter. It can be interpreted as that the wave propagates along ay cap. The wavelength lambda is equals to 188.5 meter. The wave amplitude is 10 volt per meter. The wave number k is equals to 0.33 radian per meter. फटाफट रीड करो, बताओ कि बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। ऑफिशियल नमस्ते, ग्रेट ग्रेट, ऑफिशियल नमस्ते आपको भी। चलो फटाफट रीड करो इस क्वेश्चन को, मैं ऑलरेडी इसलिए हट गया हूं आप लोगों की स्क्रीन के सामने से। एमएसक्यू है, थोड़ा इज्जत करके एक एक ऑप्शंस को फट से पढ़ना, ऐसा नहीं है कि जो आंसर आ गया बस उसमें स्टिक करके आंसर बता रहे हैं, नहीं। Read this problem carefully and tell me what would have been the best most answer for this given question. क्लियर है प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम में क्लियरली गिवन है, एंड दैट इज बीन 10 cos 10 to the power of 7t plus of kz ay cap. इट कैन बी इन्फर्ड, तो यहां इस प्रॉब्लम से क्या क्या इन्फर किया जा सकता है? पहले बात कर रहा है द वेव प्रोपोगेट्स अलोंग ए वाई कैप। वेव प्रोपोगेट्स अलोंग ए वाई कैप, नहीं मेरे भाई, वेव ए वाई कैप के डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है माइनस ऑफ ए जेड कैप के डायरेक्शन में। हाँ, लेकिन जब ये ट्रेवल कर रहा है तब उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा और हमेशा ए वाई कैप के डायरेक्शन पे, तो कोई कंफ्यूज मत होना, ए इज बिना रॉन्ग स्टेटमेंट। अब बात हो रही है लैम्डा की। लैम्डा के लिए आपको निकालना होगा बीटा, बीटा के लिए निकालना होगा ओमेगा और बीटा का, ओमेगा और जस्ट मिनट, ये ओमेगा और बीटा का रेशियो। लेकिन चूंकि फ्री स्पेस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है तो वीपी की वैल्यू तो इंश्योर कर लिया आपने, एंड दैट इज बीन 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 10 to the power of 7। आप बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। वैसे इस प्रॉब्लम में बीटा पूछा है, हाँ वेव नंबर पूछा हुआ ना, बीटा बीटा भी पूछा हुआ है। तो वेव नंबर बीटा निकालने के लिए अपन क्या करें, सबसे पहले बीटा को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ और बाकी डेटा लेके आते हैं राइट की तरफ। तो वैल्यू कितनी होगी ये देखें, बीटा इज सपोज टू बी 10 to the power 7 divided by 3 into 10 to the power of 8। 10 to the power of 7 divided by 3 into 10 to the power of 8। ये वैल्यू हो कितनी जाएगी ये बताएंगे मेरे को? 1/3 और नीचे ही आएगा तो ये होगा 1/, देखो कितना आएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है, 10 to the power of 7, 10 to the power of 7 7 7, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 30 होगा और ये वैल्यू जो होगी 0.033 आएगी, 0.033 आएगी, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देना, D is also been discarded, D is also been discarded। चलिए, वैसे मैंने जो फ्रेम किया था मेरे हिसाब से ये मैंने मिस्टेक किया होगा, बट एनीवेज लेट मी चेक इट आउट वंस अगेन। ये ठीक, एम्पलीट्यूड 10 बिल्कुल है भैया, एम्पलीट्यूड 10 ही है। लैम्डा निकालना है, लैम्डा होगा बीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा होगा 2 पाई बाई ऑफ बीटा, ये होगा 2 पाई। और बीटा की वैल्यू कितनी देख ले, बीटा की वैल्यू ऑलरेडी अगर 0.33 होती, 0.33 होती, नहीं है 0.033 है, ये होगा 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.033 और ये वैल्यू आ रही है 190, हाँ 185, 188 के आसपास, ये लगभग लगभग। तो यस, दिस इज बीन द राइट वन।
दिस इज बीन द राइट वन, बी एंड सी, दिस इज बीन द राइट वन। एक अकेले क्वेश्चन ने आप लोगों के कई कंसेप्ट को एक साथ क्लियर किए होंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ढंग से इस प्रॉब्लम को पढ़ें और बताएं कि इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा गया है इनको सेटिस्फाई करते हुए कौन सा इक्वेशन आप लोगों को दिखने वाला है। एनीवेज एक काम करते हैं, ये क्वेश्चंस मैं कल कुछ अच्छे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसके साथ में एसोसिएट करा लूंगा, तो आज तो इस क्वेश्चन को कराना थोड़ा इररिलेवेंट होगा, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे, आज इस क्लास इस क्वेश्चन को मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो यार मेरी ऑलरेडी जो है वो क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी में डेली 5:30 बजे, तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, उसमें भी बहुत प्यार से क्वेश्चन करा रहे हैं, वहां तो पोल्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ करा रहे हैं, तो आप लोगों को मस्ट है वो करना ही चाहिए एक्चुअली में अटेंड, ठीक है। और वैसे भी हमारे कोर्सेज के प्रोडक्ट्स के जो कॉस्ट है वो अभी एकदम मिनिमल बेयर कॉस्ट में है, तो अगर आप लोगों को वाकई में हमारे साथ ऑनबोर्ड होकर पढ़ाई करनी है, सो आंख बंद करके आप हमारे साथ ऑनबोर्ड हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारी कॉस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट नल है, देखो 4,499 में, 6,499 में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, इसमें हर एक फीचर्स हैं। आप चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहते हैं कोर्स की, घर में बैठ के शांति से अपना टाइम निकाल के जब जो टॉपिक जब जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, हमारा लाइव क्लास भी ले सकते हैं और लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं, बट सबकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो देखोगे 5-6 हज़ार के अंदर है, तो यार ये तो मस्ट है प्रोडक्ट है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।